All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder. Carbon dioxide, the gas we release while breathing. जानते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है? आइए देखते हैं इस क्लास में. Hi, I am Manisha Singla. Welcome to the S Chand Academy. आज की क्लास में हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और VSEPR थ्योरी को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि डिफरेंट कोवलेंट कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स तक हम कैसे पहुंच सकते हैं और उनकी शेप्स को कैसे एनालाइज कर सकते हैं. अगर आपके पास बुक की हार्ड कॉपी है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ई बुक भी रेफर कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया गया है. पिछली क्लास में हमने कोवलेंट बॉन्डिंग की इनिशिएशन की थी, पढ़ा था कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, किस टाइप के एटम्स कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स के स्ट्रक्चर्स को हम हाइब्रिडाइजेशन से कैसे निकाल सकते हैं. उसी तरीके से हमारे पास दो और थ्योरीज़ हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वेस्पर थ्योरी, जो कि हमें केमिकल कंपाउंड्स जो कोवलेंट बॉन्डिंग से बनते हैं उनके स्ट्रक्चर्स को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती हैं. Let's start with the valence bond theory. What is the valence bond theory? Valence bond theory, along with the molecular orbital theory, was developed to use the methods of quantum mechanics to explain the chemical bonding. मैं आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूँ कि सबसे मेजर थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वेस्पर थ्योरीज कुछ इनिशिएशन पॉइंट्स हैं. The valence bond theory focuses on how the atomic orbitals of the dissociated atoms combine to give individual chemical bonds when a molecule is formed. मतलब atomic orbitals कैसे combine करते हैं to give a molecular orbital. लेकिन valence bond theory में हम सिर्फ atomic orbitals पे focus करेंगे and we will not be talking about the molecular orbitals. The simplest case to consider is the hydrogen molecule. Hydrogen molecule which consists of two hydrogen atoms, that is H2. When we say that two hydrogen nuclei share their electrons to form a covalent bond, we mean in VB theory, that is in the valence bond theory, that the two spherical 1s orbitals overlap and contain two electrons. That means हर हाइड्रोजन एटम, सिंस वी आर कंसिडरिंग टू हाइड्रोजन एटम्स हियर, हर हाइड्रोजन एटम का एक ऑर्बिटल होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा. जब दोनों हाइड्रोजन एटम्स ओवरलैप करेंगे टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, तो एक कॉमन ऑर्बिटल फॉर्म होगा विच इज़ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें दोनों ही हाइड्रोजन्स का एक एक इलेक्ट्रॉन लाई करेगा. दैट इज़ वॉट इज सेड बाय द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. Now, how far apart are the two nuclei? If they are too far apart, अगर ये nuclei एक दूसरे से बहुत दूर हैं, their respective 1s orbitals will not be able to overlap and thus no covalent bond can be formed. That means कोई भी दो atoms जिनके बीच में covalent bonding होगी, they need to be placed at a certain distance from each other. Beyond that distance, there will be no attractive force और कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, या फॉर दैट मैटर कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा. देयर हैज़ टू बी अ सर्टेन डिस्टेंस एट विच द टू एटम्स आर प्लेस्ड इन ऑर्डर टू फॉर्म अ बॉन्ड. जब तक एटम्स एक दूसरे से एक सर्टेन डिस्टेंस पर प्लेस्ड हैं, दे बिहेव एज सेपरेट हाइड्रोजन एटम्स. बट व्हेन यू ब्रिंग देम क्लोज इनफ टू फॉर्म अ बॉन्ड, they will lose their individual identities and form a molecule. That means as they move closer and closer together, the orbital overlap will begin and a bond begins to form. The lower the potential energy of the system, the attractive positive negative electrostatic interactions become possible between the nucleus of an atom and the electron of the second atom. जितनी कम पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होगी उतनी ईजिली बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. सिंस यहाँ पे दो एटम्स है कंसिडरेशन में, तो देयर विल बी डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस. वन विल बी द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द फर्स्ट एटम एंड द न्यूक्लियस ऑफ द सेकेंड एटम. The electron of the second atom
and the nucleus of the first atom, and also between the electrons of the two atoms that will be of the repulsive type. However, the atoms get closer, the repulsive positive interactions between the two nuclei also begin to increase. That means जब हम इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कंसिडर कर रहे हैं तो दे आर अनलाइक चार्जेस एंड दे विल बी अट्रैक्टिव फोर्सेस, पर जब हम दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करते हैं दे आर लाइक चार्जेस एंड सो देयर विल बी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिपल्शन. At first, this repulsion is more than offset by the attraction between the nuclei and the electrons, but at a certain point, as the nuclei get even closer, the repulsive forces begin to overcome the attractive forces and the potential energy of the system rises quickly. मतलब एक certain distance पे जब दोनों atoms हैं तब attractive forces कम हैं, जैसे जैसे वो पास आएंगे attractive forces increase होंगे and the repulsive forces will also be increasing. These repulsive forces will increase the potential energy abruptly. When the two nuclei are too close to each other, we have an unstable high energy situation. जब वो बहुत close हो जाएंगे तो एक unstable situation हो जाएगी और there is a defined optimal distance between the nuclei in which the potential energy is at a minimum. So that means the two atoms need to be at a distance that the potential energy between the two is minimum. हम जानते हैं कभी भी जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी हैज़ टू बी मिनिमम, जितनी कम एनर्जी होगी उतनी ईजिली बॉन्ड फॉर्म होगा. So here also the point where the potential energy becomes minimum, at that point the bond formation will take place. The optimum internuclear distance is called the bond length. The distance at which the potential energy is minimum and the bond is formed, उसको हम bond length बोलते हैं, which in this case is 74 picometers. That is in the case of hydrogen molecule. Likewise, the difference in potential energy between the lowest energy state, that is at the optimum internuclear distance, and the state where the two atoms are completely separated is called the bond dissociation energy or the bond strength. So now we are familiar with the concept of bond length as well as bond dissociation energy or the bond strength. Now in the hydrogen molecule, the valence bond theory uses two electrons, as I have already told you, one electron from each of the hydrogen atoms. So we can denote it as electron 1 and electron 2, right. Let us say that electron 1 has a wave function of psi A and electron 2 has a wave function of psi B on the, which is placed on the second hydrogen atom. Then the simplest description of a hydrogen molecule with two electrons and two nuclei, one being donated or shared by each of the hydrogen atoms, can be written as psi simple is equal to psi A 1 into psi B 2, where 1 and 2 denote the respective hydrogen atoms or the electrons which are present in the first hydrogen atom and the electron which is present in the second hydrogen atom. The psi simple wave function predicts an energy that is about 6% of the experimental value at a bond length of 0.90 picometers, which is considerably longer than the experimental value which we found, that was 0.74 picometers. Therefore, this does not address the indistinguishability of the problem. That means we cannot distinguish each electron from the other. That means once a molecule is formed, the electrons lose their identity and we cannot say that electron 1 belongs to hydrogen atom 1 and electron 2 belongs to hydrogen atom 2. Instead, now both the electrons belong to the molecule. To account for the indistinguishable nature of the two electrons in the system, a covalent wave function that is better than the above equation can be written as psi covalent is equal to psi A1 into psi B2 plus psi A2 into psi B1. क्या समझते हो इस इक्वेशन से? Let us see after a small break. So myself Nitin Puri, who will be coming with more number of lectures for you to have not only the relativity but more number of topics in the engineering field so that you can have a better understanding of the subject on S-Chan platform. I hope you will enjoy it. Thank you.
वेलकम बैक टू द एस चांद अकेडमी। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको एक इक्वेशन दिया था इन टर्म्स ऑफ द वेव फंक्शन of the two hydrogen atoms, where I said that instead of taking psi simple, we can consider an equation which says psi covalent is equal to psi A1 into psi B2 plus psi A2 into psi B1। और मैंने आपसे पूछा था कि इस इक्वेशन का मतलब क्या है। देखिए, इस इक्वेशन में हम 1 और 2 दोनों हाइड्रोजन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर कर रहे हैं। एंड एज आई सेड दैट इलेक्ट्रॉन्स लूज देयर आइडेंटिटी, मतलब अब हम नहीं बता सकते कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से हाइड्रोजन एटम को बिलोंग करता है। तो इंस्टेड ऑफ डिस्टिंग्विशिंग देम वी मेक अ इक्वेशन इन विच वी आर कंसिडरिंग बोथ द इलेक्ट्रॉन्स ऑन बोथ द एटम्स कलेक्टिवली। तो पहले स्टेप में psi A1 एंड psi B2 हो गया, और उसके एडिशन में ही एक और फैक्टर आ गया जिसमें हमने psi A2 कंसिडर कर लिया और psi B1 कंसिडर कर लिया। दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन 1 इज समटाइम्स इन psi A on atom A and sometimes it is in the electron B, in the atom B, and similarly for the second electron. The potential energy curve for psi covalent wave function predicts a bond energy that is about 72% at a bond length of 0.87 picometers. So the wave function is more accurate than we were originally considering. 0.74 से 0.87 पर जाना और 0.9 पर जाना, दोनों में से हमारा बेटर ऑप्शन है कि हम सेकेंड वाले केस को कंसिडर करें। तो इसका मतलब नाउ वी कंसिडर दैट द इलेक्ट्रॉन इज नॉट डिस्टिंग्विशेबल फॉर वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम, बट इट इज सब्सिक्वेंटली प्रेजेंट ऑन बोथ द एटम्स, once here and once there. Some of the rules of the valence bond theory were not completely fulfilling. There were some flaws or limitations of the valence bond theory which made us to study more. What were the drawbacks of valence bond theory? First thing, it had a failure to describe the tetravalency exhibited by carbon. Carbon tetravalent क्यों है, ये valence bond theory से पता नहीं चला. We could just take the simple examples like hydrogen molecules, but जैसे जैसे complex molecules आते गए valence bond theory से explanation थोड़ा complex हो गया. No insight was provided on the energies of the electrons. किसी इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी है उसकी इंटेंसिटी भी हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पता नहीं चलती। सिर्फ ये पता लगा कि एक इलेक्ट्रॉन है वो अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर रहा है व्हेन द मॉलिक्यूल इज बीइंग फॉर्म्ड, बट उसकी एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है वो हमें नहीं पता चल रहा। Then the theory presumes that electrons are localized in specific locations. That means, according to the valence bond theory, electron सिर्फ कुछ ही particular points पे present हो सकता है, which is not true. So that again serves as a drawback for the valence bond theory. It does not give a quantitative interpretation of the thermodynamics or the kinetic stabilities of the coordination substances. Coordination substances आप लोगों ने सुना होगा, which are formed by the d block elements. तो उन एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर्स को भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जस्टिफाई नहीं कर पाया. सो दीज वर सम ऑफ द ड्रॉबैक्स विच द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हैड, ड्यू टू विच वी हैड टू मूव ऑन टू another theories. The next theory that came into picture is the Vesper theory, that is the valence shell electron pair repulsion theory, which came in 1957. It is used for the prediction of shapes of individual molecules based upon the extent of the electron pair electrostatic repulsions and determined to use the steric numbers. So we will be taking into consideration the electronic repulsions that are taking place in the atom, and on the basis of that we will predict the shapes of the different covalent molecules. The theory is also called the Gillespie-Nylon model on the basis of the scientists who discovered the theory. The premise of the Vesper theory is that a constructed Lewis structure आप सबको पता होगा जिसमें हम valence electrons को depict करते हैं by small dots. So the Lewis structure is expanded to show all the lone pairs of the electrons alongside protruding and projecting bonds for predicting the geometric shape and lone pair behavior of a compound through consideration of the total coordination number. मतलब कोई भी मॉलिक्यूल जो हम दिखाते हैं उसमें कितने लोन पेयर्स हैं, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन सबको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में दिखाएंगे और फिर एनालाइज करेंगे कि उसमें कितने रिपल्सिव इफेक्ट्स हैं, और उसके बेसिस पे वी विल बी एबल टू प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री एंड द शेप ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल. द वेस्पर थ्योरी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल और पॉलीएटॉमिक आयन
is determined primarily by the repulsion among the pairs of electrons associated with a certain atom, basically the central atom. The pairs of electrons may be bonding or non-bonding, and together they are called the lone pairs. Only the valence electrons of the central atom influence the molecular shape in a meaningful way. That means if I am considering, say for example, a molecule जिसमें सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर्स हैं, तो उन लोन पेयर्स के रिपल्शन इफेक्ट्स को हमें ज्योमेट्री कैलकुलेट करते हुए कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा. लेकिन अगर हम बाकी के इलेक्ट्रॉन्स को या बाकी के एटम्स को कंसिडर करते हैं तो उनके लोन पेयर्स शायद उतना इफेक्ट नहीं करेंगे जितना सेंट्रल एटम के लोन पेयर्स करेंगे. Now Vesper had some basic assumptions. First, the pairs of electrons in the valence shell of the central atom repel each other. जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे सेंट्रल एटम में. These pairs of electrons tend to occupy positions in space that minimize repulsions and maximize the distance of separation between them. मतलब इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से प्लेस्ड होंगे कि उनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो. दैट इज बाय नेचर. जितना कम रिपल्शन होगा उतना स्टेबल कंपाउंड होगा. सो द placement will be such that there is minimum repulsion within the molecule. The valence shell is taken as a sphere with electron pairs localizing on the spherical surface at maximum distance from one another. ये भी हम देखेंगे कि कैसे होता है. A multiple bond is treated as if it is a single electron pair, and 2 or 3 electron pairs of a multiple bond are treated as a single super pair. Is it clear? Where 2 or more resonance structures can depict a molecule, the Vesper model is applicable to such molecules also. तो resonance का effect भी consideration में आएगा. Basically, there are 3 types of repulsions that occur when we are considering the Vesper theory. The first one is the lone pair repulsion. मतलब अगर 2 lone pairs हैं तो वो आपस में एक दूसरे को repel करेंगे. A lone pair bond pair repulsion मतलब central atom का जो lone pair है वो बॉन्डेड एटम के पेयर को, इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल करेगा. और थर्ड है बॉन्ड पेयर रिपल्शन, मतलब कि 2 बॉन्डेड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिपल्शन होगा जिसको कंसिडर किया जाएगा. नाउ अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी, द लोन पेयर रिपल्शन इज द मैक्सिमम, द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन लाइज नेक्स्ट, एंड द थर्ड वन इज द बॉन्ड पेयर रिपल्शन. मतलब बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम होता है और लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है. किसी भी मॉलिक्यूल में अगर 2 लोन पेयर्स हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा रिपल्शन इफेक्ट शो होगा एज कम्पेयर टू अ मॉलिक्यूल विच हैज़ 1 लोन पेयर एंड और अ मॉलिक्यूल विच हैज़ नो लोन पेयर. So there will be minimum repulsions in a molecule which has no lone pairs and maximum repulsion between or in a molecule where we have 2 lone pairs. The Vesper theory is usually compared and contrasted with valence bond theory, which addresses the molecular shape through the orbitals that are energetically accessible for bonding. तो valence bond theory और Vesper theory में कुछ similarity है, not completely but partly. The valence bond theory concerns itself with the formation of sigma and pi bonds, molecular orbital theory with the orbital formation, the molecular orbital formation, and Vesper theory has long been criticized for not being quantitative and therefore limited to the generalization of crude, even though structurally accurate the molecular geometries of the covalent bonds. That means the Vesper theory normally gives correct structures, but it does not take into consideration all the points that need to be taken. Now prediction on the basis of the Vesper theory. So on the basis of the Vesper theory also, we predict the structures like we did for in case of hybridization. The structures are similar to the hybridized structures. The only difference is that here we take into consideration the electronic depictions rather than the hybridized orbitals that we did earlier. As you can see on my screen, the shapes of different molecules have been shown on the basis of the Vesper theory. Also, the triple bond, if it's a multiple bonded compound, then the triple bond repulsion will be maximum, the double bond will be slightly lesser, and the single bond repulsions will be the minimum. Presence of lone pairs on the central atom will distort the molecule to the maximum. Presence of 2 lone pairs will further distort. The magnitude of repulsion between the bonding pairs of the electrons depends on the electronegativity difference between the central atom and the atoms forming a bond. That means the repulsions between carbon and hydrogen will be lesser
than the repulsion between carbon and chlorine. Now for predicting the geometry on the basis of the Vesper theory, we need to determine the central atom, the electron dot structure of the central atom, the arrangement of the electron pairs around the central atom, the arrangement of the bond pairs, and finally on that basis we can calculate the geometry. So we need to know the number of lone pairs, the number of bond pairs, and how they are placed in a molecule to know the geometry. On my screen is shown a small table which depicts the geometry of different molecules on the basis of the Vesper theory. It has angles similar to that predicted by the hybridization and shapes also similar to that predicted by the hybridization, but the only consideration is that here we consider the electronic repulsions. So we will end the class for today. आज की क्लास में हमने कोवलेंट बॉन्डिंग की 2 मेजर थियरीज़ के बारे में पढ़ा। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो एस चांद पब्लिशिंग की एक बुक है जिसे आप पढ़कर और अच्छे से समझ सकते हैं, जिसका कवर मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है एंड इसका लिंक नीचे शेयर किया गया है, तो आप उसे भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आप हमारे आगे के वीडियोज़ के बारे में जानते रहें।